आज हम शुरू करते हैं पेज नंबर 24 से, जो कि है फ्रॉम एनोनिमिटी टू इंडिविजुअलिज्म। कैसे एक एनोनिमस राइटर से एक इंडिविजुअल राइटर खुद का नाम देने लगे थे राइटर्स लोग। ओके, सो यहाँ पर है, लेट्स सी व्हाट्स देयर इन द टेक्स्ट हियर। Many texts from this period are described as anonymous. ये जो है मिडिल इंग्लिश लिटरेचर्स में, ठीक है, पहले लोग लिखने से डरते थे या कुछ भी लिखते थे तो अनोनिमस लिख देते थे। ओके, बट इट ऑफन हैपन्स दैट अनोन हैज़ अ डिस्टिंक्टिव वॉइस और स्टाइल इवन दो नो एक्चुअल नेम कैन बी गिवन टू द ऑथर। अननोन, ठीक है, अननोन मोर प्रिसाइज टर्म, अननोन एक ज़्यादा प्रिसाइज टर्म है अनोनिमस का। ओके, जब हम लोग नहीं लिख पाते, जब ऑथर्स लोग अपना नाम नहीं देते थे तो वो अनोनिमस मीन्स पता नहीं कौन लिखा है उसको, ठीक है, वी डोंट नो द राइटर्स नेम हियर। बेवुल्फ का भी राइटर का कोई पता नहीं है, इसलिए उसका भी है अनोनिमस। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे थोड़ा सा नीचे, यहाँ पर द आउल एंड द नाइटिंगेल के बारे में बात किया गया। ये दिस इज़ द नेम ऑफ द पोएम विच डेट्स फ्रॉम अराउंड 1225, 1225, the owl and the nightingale. It dates, okay, it has the theme of nature in it. And this poem uses a Latin genre of debate. Debate means conflicts between two sides in a comic way. Okay, this poem chooses a Latin genre of debate between two sides in a comic way to show, or it shows different attitudes and values, and uses the English countryside as its setting. Okay, the nightingale is described as a rhyme. So next, this जो nightingale है poem, the owl and the nightingale, this is a kind of debate debate is held between the serious or the owl and the light-hearted nightingale. Okay, the debate is held between the owl and the nightingale. The nightingale, owl is the serious one and here nightingale is the light-hearted one. Okay, and there's issues on which debates were held. So these debates were held on the topics of war, religious issues, religious, religious issues, okay, and new thoughts of love. इन तीनों के बीच में वहाँ conflicts हुआ. Then there's a next thing which is Winner and Vaster. Winner and Vaster dates from 1360, and it also has a debate form in a more serious way, contrasting the man who wants wealth in society with the carefree person who spends all the money. This is one of the first allusion in literature, this Winners and the Vasters, which shows the importance of money and contains the strong element of social criticism. Okay, social criticism किस तरीके से यहाँ पर दिखाते हैं कि जो पोप है, the pope and his greedy priest are contrasted with the noble lords and their followers. But like the owl and the nightingale, no final judgment is given. दोनों पोएम में, विनर्स एंड वास्टर्स, आउल एंड द नाइटिंगेल, दोनों पोएम में डिबेट हुआ. ओके, conflicts took place but no final judgment was given. The readers or we audience doesn't know who wins in the debate and must decide it independently. Okay, it's a free decision of the readers. There's a growing awareness in the text in that time. What awareness readers के बीच में awareness हुआ and is constantly widening and effective when used. So what was the awareness? The audience were probably not have been limited to the dialect where the texts were written,
but would have a wide range of cultural reference: Latin, French, and European. The audience was, however limited to educated court and aristocratic circles. Although the production of literature was growing, mass literacy did not happen until more than 500 years later. ठीक है, at this time there was a sufficiently widespread literacy among lay people for there to be a wide circulation of books lent and borrowed. So यहाँ पर है कि ना ऑडियंस ज़्यादा जागरूक बन रहे थे. हाउ? एज प्रोबेबली दी बुक्स वे लिमिटेड, वो लोग को डायलेक्ट जो लोग यूज़ कर रहे थे राइटर्स, वो लोग को नहीं पता था, तो वो लोग किस तरीके से रेफरेंस करते थे, या फिर कल्चरल लैटिन फ्रेंच को देखते थे. सो यहाँ पर है कि ना जब राइटर्स लिटरेचर में लिखने लगे तो जैसे जैसे लिटरेचर बढ़ा तो वैसे वैसे ज़्यादा मास लिटरेसी नहीं था, मतलब ज़्यादा लोग नहीं पढ़ते थे, उसको आता ही नहीं था. लेकिन फिर बाद में क्या हुआ कि उसके 500 years लेटर बढ़ गया ये सब. ठीक है ना. अब क्या होता है कि सब इंग्लिश में ही पढ़ता है ना. वही है कि देयर वाजंट एनी मास लिटरेसी until 500 years later. Okay, so next is King Horn, which dates from about King Horn, King Horn, which dates from about 225. It is the earliest surviving verse romance in English. It is a tale of love, betrayal, adventure, and it shows how English assimilated the characteristics of French कोटली स्टोरीज. ठीक है, इंग्लिश कैसे फ्रेंच का कोटली लव स्टोरीज को इसमें दिखाया है, दर्शाया है. ओके, with a local setting. Courtly love stories with a local setting. Horn. Okay, Horn. Okay, and it also the range of poems. Okay, the range of poems was expanding rapidly, or with a theme of religious, secular, moral, political themes. Okay, these themes were becoming the subjects for writing and reading. The alliterative revival in the second half of 14th century and a growing literate leadership expands this range, and many more manuscripts copies of the texts are found, showing that writing and reading are widespreading and were not limited either to capital city London or to highly educated readers. इसमें क्या होना, alliterative revival means revival means क्या होता है ना, फिर से उसको लाना. It's the reuse thing. तो सेकेंड हाफ ऑफ 14th सेंचुरी में क्या हुआ कि ना रीडर्स ना एक्सपैंड होने लगे, बहुत ज़्यादा बढ़ गए, मतलब धीरे धीरे पूरा बढ़ने लगे. एक्सपैंडेड टू रेंज क्या दिखाता है कि वो लोग एक्सपैंड हुए. देयर वेर मैन्यूस्क्रिप्ट्स. ओके, टेक्स्ट्स वेर फाउंड विच शोज राइटिंग एंड रीडिंग्स वेर स्प्रेडिंग and were not only limited to capital city London or the highly educated readers. Storytelling is a fundamental part of Middle English literature. Bible stories had been retold in the Anglo-Saxon period. Bible was a version of Genesis or Exodus. Okay, Genesis. I'll write the spelling. Genesis or the Exodus. Exodus. Okay, Exodus. For example, Patience was written in late 14th century. It tells about, or it retells about, the Bible story of Jonah and the whale, making it both comic and instructive. Okay, it shows the virtue of patience. Man's smallness in relation to God is stressed. Here it shows how the man doesn't have faith in God, or very small relation of God. ठीक है, विथ, और जिससे जोना को कंपेयर किया गया है. द वर्ड मॉन्स्टर इज इंटरेस्टिंग, इंटरप्रेटेड एज मिनिस्टर. यहाँ पर एक और है वर्ड, द वर्ड इज नोन एज मॉन्स्टर. ओके, इट इज इंटरप्रेटेड एज मिनिस्टर. इट इज इंटरप्रेटेड एज मिनिस्टर और cathedral. CATHEDRL, cathedral.
ठीक है. It is linked with monastery and if only in sound, and it sounds as monster. These are linked with monastery but sounds as monster, but these intention is humorous as well as moral. Okay, and this is the important step in the handling of religious subject matter. Paul introduces an original story in the form of which was to become one of the most frequent in medieval literature, the dream vision. इसमें ऑथर्स जैसे कि चॉसर और लैंगलैंड यूज दिस फॉर्म, द फॉर्म ऑफ ड्रीम विजन, इन विच द नरेटर जो है, इस ड्रीम विजन में क्या होता था कि एक नरेटर डिस्क्राइब करता था एक दूसरा वर्ल्ड को, अ हेवनली पैराडाइज को, which is composed with earthly human world. In Pearl, the narrator sees his daughter who died in infancy. Okay. पर्ल में क्या होता, हम कल बताए थे, जब हम कल पढ़ा रहे थे तो इन माय प्रीवियस वीडियो हम बताए थे कि पर्ल वाज नहीं, पर्ल एंड पेशेंस. ठीक है, पर्ल एक क्या है, पर्ल का राइटर हमें नहीं पता है. ठीक है ना, इसलिए वी से एज पर्ल पोएट. सो पर्ल का एक मेडिवल लिटरेचर का एक टेक्निक है ड्रीम विजन, जिसमें पर्ल में क्या, इसमें ड्रीम्स को डिस्क्राइब किया जाता है विच गोज ऑन पैरेलली. Okay, so here in Pearl, the narrator sees his daughter who died in infancy. Infancy means the ground of infancy, and here he says the ground of all my bliss. And now that daughter, or now she now has a kind of perfect knowledge which her father can never comprehend. The whole poem underlines the divide between human comprehension and perfection, human comprehension and perfection, and these lines show the gap between possible perfection and fallen humanity between them. Okay. इसमें फिर मिल्टन अभी हम मिल्टन पढ़ाए नहीं है, तो मिल्टन विल कम आफ्टर द एजेस. Okay, since leave it. Now we have some lines of Beowulf, Pearl poets. Next is the women's voice. Women's voice is very less. हम women's voice भी कर लेते हैं. Women's voices में क्या है कि पहला नाम है हम लोग का मैरी डी फ्रांस, who was English writer who wrote in late 12th century. ओके. और क्या लिखी थी, एक मिनट. फर्स्ट है हम लोग की मैरी डी फ्रांस. ठीक है, वो एक इंग्लिश राइटर है जो लेट 12th सेंचुरी में लिखी थी. ठीक है, और 12 लेस, उसका क्या बुक का नाम था, 12 लेस. दिस वॉज द नेम ऑफ हर बुक which contains the series of short romance based on unwritten Breton songs. Okay, Mary's was not by any means the only female voice of her time. Mary पहली female voice नहीं थी उसके टाइम की. ठीक है ना, बस सिर्फ her name is mentioned. Okay. Hrostiva नेक्स्ट है एक ह्रोस्तिवा. 2 नंबर HROTSVITHA. Hrostiva, she was a 10th century abbess. Okay, she was a 10th century abbess from Saxony. She was from Saxons. Okay, Saxons, which is generally seen as the first woman writer in Europe. और यही ह्रोस्तिवा जो है, she is the first woman writer in Europe. और ये क्या लिखी थी, Ancrewisses, WISSE, which is also known as Ancre Rule. Okay, Ancre Rule, REWLE. Okay,
It's a book of advice. It's a book of advice on how to live, directed first at nuns but clearly also to a wider readership of women. Next we have Christian de Plazin. Let me underline it. whatsoever. Christian de Plazin है उसके बाद, जो कि who is a French first full time woman. Christian de Plazin. Okay. She wrote and one of the first question authority man right. ये पहली woman थी जो कि मैंस के राइटिंग को question की. This is C. Christian. Okay. In her book The City of Ladies, she comments on Lamentations of Matthew Lowes. City of Ladies. Okay. वो वहाँ पर कमेंट की थी on the Lamentations of Matthew Lowes. Matheolus. Okay. Matthew Lowes comment की थी a misogynistic satire which Chaucer's Wife of Bath also mentions. उसके बाद है कि क्रिश्चियन डी प्लाजन ट्रांसलेटेड बाय एंथनी वुडविल. क्रिश्चियन डी प्लाजन का ज़्यादातर वर्क्स कौन ट्रांसलेट करता था? एंथनी वुडविल. ओके. WOODVILLE. Anthony Woodville. Her moral proverbs of Christian was the first written by a woman to be printed in England by Caxton in 1478. Okay, and it is here that the word authoress first appears in English. और इसके वजह से ही पहला जो वर्ड है authoress, AUTHORES, it first appears in English. Okay, long before Caxton, however, there was a growing readership of Mary's Lays. Mary's का जो लेस था 12 लेस, वो ज़्यादातर पहले बनने लगा for the books of instruction and devotion and for visionary writing. Julian of Norwich experienced such visions at the age of 30 on her deathbed. जब वो मरने वाली थी तब उसको ये सब विजन्स आया. ठीक है. उसके बाद वो नन बन गई, वो जूलियन. ठीक है. जूलियन एक नॉर्वे की थी, नन बन गई. एंड शी सेट डाउन हर विजन इज अ प्रॉबिंग analytical discussion of such difficult themes as faith, sin, and motherhood of God. This is the conclusion of a challenging writing given here in the original Middle English. Okay. उसके बाद है मार्गरेट टेम्प. MARGERY. Margaret Temp. Okay, Margaret Temp is quite a different kind of visionary writer. ये एक visionary writer है पर different type की. But just as the original in her way as Christian de Plazin, ये भी लेकिन original है, ये अपने तरीके से है. Though less assured than Julian, she detected her work, the book of Migraine came. ठीक है ना. The two men as she could never neither read or write. ठीक है ना. तो वो क्या की ना, वो ये अपना एक बुक जिसका बुक का नाम है द बुक ऑफ माइग्रेनी केम्प. ओके, माइग्रेनी केम्प, जिसमें क्योंकि ना माइग्रेनी केम्प जो थी उसको ना पढ़ना लिखना नहीं आता था. ठीक है. तो वो क्या की, वो दो आदमी लोग को ये बुक बताई. बट हर वुमेन्स वॉइस स्पीक लाउड एंड क्लियर डाउन दी सेंचुरीज. ठीक है ना. चाहे उसका साइकोलॉजिकल स्टेट ऑफ माइंड कैसे भी उसका फिजिकल ये हो, मतलब कुछ भी हो, लेकिन उसका जो वॉइस है वो ज़्यादा बोला. ठीक है. साइकोलॉजिकल स्टेट ऑफ माइंड. शी स्पीक्स ऑफ हर सेल्फ इन द थर्ड पर्सन एज दिस क्रीचर. ओके, शी स्पीक्स इन हर सेल्फ. She speaks of herself in the third person as this creature, although she gives the book her own name. Mole Flanders in Daniel before
Defoe's novel, which bears her name in perhaps the nearest later self-casting heroine of her own moral tale. She was her own heroine in her books. Okay, this is the only thing in women's voice. Next topic is the fantasy. We have many more in this fantasy, travel, Geoffrey Chaucer. I'll do it in the next video.